लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिकाङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूतृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं सकीलकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षः सरशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमङ्कुदश्याममायताक्षमालकृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभो भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतवाहनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवसानुभूतादिव्यव्ययः सम्भवो पावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्मनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा सविष्णस्तविरोध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः लोकिताक्षप्रदर्शनः प्रभुगतस्त्रिगुप्तामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः क्रियात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेखा प्रजापवः अरः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अरः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरक्षितः वृषाकविरमेयात्मा सर्वयोगविनिष्ठः वसुर्वसुमनः सत्यसमात्मा संहितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भद्रुर्विश्वयोनिष्विश्रवः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदभ्यन्तो वेदाङ्गो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्वदनः चतुर्भुजः प्राविष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघशुचिरुचितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवः
पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो रविन्द्राक्ष पद्मगर्भश्रीलकृत् महद्दीर्घो वृद्धात्मा महाशो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमसमयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवानमिदाशनः पूर्ववर्षो अनुदेव श्रीधरः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परतिः परमस्पष्टः पुष्टः सुवेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां शेषो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणतः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षणः पृथुः कालः परमेशी परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्धो लब्धो महाकोशो महाभोगो महागणः अनिर्विण्णः सविष्टो भूधर्मयुक्तो महामहः नक्षत्रनेमि नक्षत्री शमः श्यामः समीनः यज्ञेन्द्रो महेशश्चक्रसहस्रब्रह्माण्डैः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् मनोहरो जिगत्क्रोधो वीरबाहुर्विलारणः स्वापनः स्ववशोऽव्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो हरीश्वरः अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता प्रदक्षिणः कवस्त्रिनेमि सत्त्वस्य सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृत्तुरुः उत्तरोपोपतिर्भोक्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कलीयुगो भूतलक्षणः सोमो मृदः सोमं जुषितुरसत्तमः विनयो जयसत्यसन्धो दाशाकः सात्वताम्बलिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो विरविक्रमः अम्भो नितिरनन्दात्मा महोदतिशयोन्नतः अजो महार्घस्वभावो योजनाविक्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षि कविराचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिवरस्कृताध्यक्षो महाशिखरप्रामकृत् महापराभो गोविन्दस्त्रेणकराङ्गतिः गुह्यो कवीरो गहनो बुद्धश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो जगत्कृष्णो दर्शनोचरः वरुणो वारुणो वृषपुष्कराक्षो महामनः भगवानन्दी वनमाली हरायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्दधिसत्तमः गगनवारणपरशुदारुणो द्रविणप्रदः दिवसर्वदिव्यासो वाचस्पतिर्योनिनः त्रिसामा सामगस्सामनिर्वाणं वैशजं विशत् सन्न्यासकृष्णं शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टा कुमुदकुवलेशयः गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिमग्रीनिवृतात्मा संशेता क्षेमकृषिकः श्रीवत्सवक्षः श्रीवास श्रीहरि श्रीमदाम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीनिवामनः श्रीधर श्रीधर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गसदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिसिंहसंशयः उदीर्णः सर्वदक्षक्षुर्णेश्वरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा
नित्यमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एको नैकसवक्तृमिर्यततमनुपमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गशतनान्तरी वीरः विषमशून्यो वृताशीलशतशतः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत्
चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली रवि शान्ति शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेणं यैनं श्रुत्या नित्यं यश्चापि वैद्यते नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोऽसुरेव जमानः वेदान्तो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धर्माग्नि प्राप्नुयात् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तते यशप्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अजरां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य जीवति भवत्यरोगो युतिमान् फलरूपगुणान् ग्रहः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत वित्तस्तु मुच्येतापन्नः फलः दुर्वान् पुरुषोत्तमम् सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेवभक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधि भयमेनैवोपजायते इमं सर्वमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः विवेकात्मा सुखशान्ति श्रीकृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौ च चन्द्राश्च नक्षत्राणां दिशो भवति वासुदेवस्य वीर्येण विदितमनुमात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरराक्षसं जगत्पते वर्तते तं कृष्णस्य स्वराजनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलमृतिः वासुदेवात्मकाम्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञैव च सर्वात्मानमाचारपदमपरिवर्तते आचारपरो धर्मो धर्मस्य प्रमुरक्षिणः ऋषयविगतो देवा महाभूतानि जन्मनारायणोपमम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनः एको विष्णुर्महद्भूतं मृतभूतानिमेषः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वरूपयः इमं सर्वं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैषेतुषशेयपातुसुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् मोहनैति अर्जुन उवाच पद्मभद्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां भ्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति सोपमेतेन श्लोकेन सुरैव न संशयः सुरैव न संशयो न मेति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते नमः इति पार्वती उवाच एनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम
महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरविदे देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौते महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं विकालं यत् पठे नित्यं धनधान्यसमधिकरः त्रिकालं यत् पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। Please request people who are sitting this side to move to the other side because we are going to have a procession starting from here and then we go down and come straight as well. So I request kindly people who are sitting here to move this side and move the mat and the chair. These couple of volunteers to help move the mat to the other side. Please move right side. Yeah, just come to the second. Yeah. You can put it properly. You can just sit on the top of it. Hello. Janvi. Hello. Janvi, Pani. Hare Srinivasa. Hare Srinivasa. Can I please request if you can go to the other side because we are going to come all the way up to that and then so if you can move the other side of the camera please. And if somebody can help to move the Hello. Thank you. Priya. Hello. Hare Srinivasa. Hello. Hare Srinivasa. Hare Srinivasa. So I need some volunteers. So we'll be calling, for a few volunteers. If you can come, no, there's no compulsion. You come on your own. So first we start. We need, people who have brought the cola and stick. If you have, 4 or 5 ladies in the frame, please. So come forward. The ladies who have cola and stick, can I request please come forward? So we will take one by one. So please. So can I request ladies who have cola and stick? Even without cola, if you, we need 3 or 4 ladies in the frame to dance. Please. Can I please request, since your God is going to have the procession here, so please come volunteer here and if you can stand 3 or 4 ladies, please come with the sticks. Thank you. Can I have 2 gents, volunteers, to carry Swami? So can I have 2 gents, please? Yeah, please come forward. Can I have one more? Please, yeah. Yeah.
Okay, today's bhajan session, it's on Lord Murugan, and literally all the songs here are in Tamil. I know we have a mixed audience here. Every month we try to do something different. Next month is going to be Marathi, by the way. So this month is going to be Tamil. So, and we'll try to tell you wherever possible. Like this, you're facing that side, but no, not like this actually. Like this. You have to be in the front. So, opposite. Okay, as they are preparing themselves. Okay, wherever possible, we'll try to tell you the meaning, but that will actually delay the session. So basically, we'll make a start. But music is music, isn't it? We all can clap. We all can enjoy and tap to music, isn't it? So we'll start with clapping then. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vel vel Muruga, vel Muruga, vel Muruga, vel Muruga. Bye.
Alright, can you play another one more song? One song? One more song? Yeah. அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, தினமும் பாட வந்தே வேலவா, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை தினமும் பாட வந்தே வேலவா. பாவடி வேலனே வலிமையினாதன், பாவடி வேலனே வலிமையினாதன், பாவடி வேலனே வலிமையினாதன், பாவடி வேலனே வரவேண்டும் மயில் மீது முருகையனே, வரவேண்டும் மயில் மீது முருகையனே, வரவேண்டும் மயில் மீது முருகையனே, வரவேண்டும் மயில் மீது முருகையனே. முருகா 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 முருகா. அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா, அழகான பழனிமலை ஆண்டவா, உன்னை அனுதினமும் பாட வந்தேன் வேலவா. திருநீரும் வெற்றி வடிவேலும், வெள்ளி திருநீரும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றும், வெள்ளி திருநீரும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றும், வெள்ளி மகிழறி நிலம் பருவரை நெஞ்சம் காணுமே, வெள்ளி திருநீரும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றும், வெள்ளி மகிழறி நிலம் பருவரை நெஞ்சம் காணுமே. இணையாடும் ஆண்டவனே வேலவா, இணையாடும் ஆண்டவனே வேலவா, எரியேனும் உழைப்பான அருள்வாயையா, எரியேனும் உழைப்பான அருள்வாயையா, எரியேனும் உழைப்பான அருள்வாயையா, எரியேனும் உழைப்பான அருள்வாயையா. முருகா 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 முருகா
தினமும் பாட வந்து வேலவா நல்லது நம்மை நல்லது நம்மை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வார் நல்லது நம்மை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வார் தீயதெல்லாம் உடம்பிட்டு வருகிட திருவருள் புரிவாய் நல்லது நம்மை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வார் தீயதெல்லாம் உடம்பிட்டு வருகிட திருவருள் புரிவாய் உன்னையன்றே வேறில்லை தேவன் தந்தையா உன்னையன்றே வேறில்லை தேவன் தந்தையா உலகாளும் ஆண்டவனே நீதானையா உலகாளும் ஆண்டவனே நீதானையா முருகா 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 மயான பள்ளி மலை ஆண்டவா அனுதினமும் பாட வந்தே வேலவா அழகான பள்ளி மலை ஆண்டவா அனுதினமும் பாட வந்தே வேலவா முருகா வெற்றிவே 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 முருகா பாலும் தேனபிஷேகமும் பாலும் தேனபிஷேகமும் பாலும் தேனபிஷேகமும் பாலும் தேனபிஷேகமும் பக்தர்களின் காவடியும் பக்தர்களின் காவடியும் பக்தர்களின் காவடியும் பக்தர்களின் காவடியும் பார்ப்பவர்கள் உள்ளம் எல்லாம் பார்ப்பவர்கள் உள்ளம் எல்லாம் பார்ப்பவர்கள் உள்ளமெல்லாம் பார்ப்பவர்கள் உள்ளமெல்லாம் பரஞ்சீவி தேவனாகி பரஞ்சீவி தேவனாகி சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா செந்தூர் கடற்கரையில் செந்தூர் கடற்கரையில் செந்தூர் கடற்கரையில் செந்தூர் கடற்கரையில் பக்தர்களை காத்திடவே பக்தர்களை காத்திட பக்தர்களை காத்திடவே பக்தர்களை காத்திடவே பார்ப்பவர்கள் மனம் மகிழ பார்ப்பவர்கள் மனம் மகிழ பார்ப்பவர்கள் மனம் மகிழ பார்ப்பவர்கள் மனமகிழ சம்மாரம் செய்தாய் சூரனை சம்மாரம் செய்தாய் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா ஆண்டவனே அலங்காரே ஆண்டவனே அலங்காரே ஆண்டவனே அலங்காரே ஆண்டவனே அலங்காரே அண்டமெல்லாம் வளமும் வந்தாய் அண்டமெல்லாம் வளமும் வந்தாய் அண்டமெல்லாம் வளமும் வந்தாய் அண்டமெல்லாம் வளமும் வந்தாய் ஐயாவை காணும் போது ஐயாவை காணும் போது ஐயாவை காணும் போது ஐயாவை காணும் போது ஆண்டி ஆண்டி காட்டி வந்தாய் ஆண்டி ஆண்டி காட்டி வந்தாய் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா 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 வேல்வேல் முருகா வெற்றிவேல் முருகா வெற்றிவேல் முருகா வெற்றிவேல் முருகா வேல்வேல் 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 முருகா
முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா உன்னை நினைத்திடுவரம்மா அம்மா உன்னை நினைத்திடுவரம்மா அம்மா மயில் மீது மனமாடி வருவான் முருகன் மயில் மீது நடமாடி வருவான் முருகன் மயில் கொண்டு அவரது மலரடி வணங்குவேன் மயில் கொண்டு அவரது மலரடி வணங்குவேன் முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா உன்னை நினைத்திடுவான் அம்மா அம்மா உன்னை நினைத்திடுவான் அம்மா தம்பி கொண்டு வருவான் முருகன் கோடி கொடி கொண்டு வருவான் முருகன் கொடிய வினத்தி திருவான் அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா வண்ணமயில் மீதேறி வருவான் முருகன் வண்ணமயில் மீதேறி வருவான் முருகன் கண்ணமதை தொட்டால் கையை பிடித்தான் கண்ணமதை தொட்டால் கையை பிடித்தான் கைவிட்டு விடுவாயோ என்று கைவிட்டு விடுவாயோ என்று என்னை கைவிட்டு விடுவாயோ என்று என்னை கைவிட்டு விடுவாயோ என்று கையின் மேலடித்து கைவிடேன் என்றான் கையின் மேலடித்து கைவிடேன் என்றான் முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா முத்துக்குமாரனடி அம்மா அம்மா வேலவா வேலவா வேல் முருகா மாவா 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 சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வலி மணிவாரா குஜரி மணாரா வலி மணவாரா குஜரி மணாரா குஜரி மணா தேவ குஜரி மணாரா வண்டமயில் பாகனா முருகா முருகா வண்டமயில் பாகனா முருகா முருகா வண்டமயில் பாகனா முருகா முருகா வேலவா வேலவா வேல் முருகா மாவா வேலவா வேலவா சூராரி சூரா சுப்பிரமணிய தேவா சூராரி சூரா சுப்பிரமணிய தேவ சுப்பிரமணிய தேவ சுப்பிரமணிய தேவ சண்முகா சரவணா முருகா முருகா
available for time? 7:10. Anybody wants to? Yeah, please take turns. Please take turns. Give everyone a turn. Volunteer. Anybody can come, please. This is for God. There's no finance here. Please. Anybody can come. இது காமெடி ஜென்ஸ் காமெடி பால் கூட பால் வந்து அழகு தெய்வமாக வந்து தெய்வமாக வந்து பழனிமலை ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவாரின் அதுரம்மை என்ற வழிவே அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மேலில் நிற்போம் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மேலில் நிற்போம் ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவாரின் என்ற வழிவே நல்ல நற்பதிடுவோம் தமிழ் பாடிடும் அன்பதாழமை கருணை செய்வோம் அமுதம் எழுவோம் தமிழ் பாடிடும் அன்பதாழமை கருணை செய்வோம் அருள் வந்த குருவாம் புயல் சேரும் என்றும் அருள் வந்த காக்கும் அழுகூரன் கோவநாடை புறமியாக சுவதியாக குமரனாக கோவநாடை புறமியாக கோலப்பொருளும் காட்சி என்ன சொல்வே கொண்டு புறமாயை கல்வியாகும் இந்த உலகத்திலோ கையுடன் பெரு வரதனாய் திகழரும் மனிதனே உலகத்திலோ கையுடன் பெரு வரதனாய் திகழரும் மனிதனை உங்குட்டென்றன் வீரன் நீங்கிறார்கள் உங்களொன்று நல்ல வழி செல்லுமே நீலவாயில் நீரும் ஏறி ஆவிரன் கூடியும் தோன்றும் நீலவாயில் நீரும் ஏறி ஆவிரன் கூடியும் தோன்றும் எவனதான் குழந்தை முழுவே கண்முய நித்திரம் பொன்பொரு வழக்கு வல்லினே அடியராதையும் பாட்டு செய்திடும் நம்பு செய்திடும் அடியராதையும் பாட்டு செய்திடும் யோகி என்றும் வந்து வாசம் Thank you very much.
just as they are preparing, wanted to explain certain things actually. You know, the first song we sang, Parani Andavar. What is Parani Andavar? Parani is a place north of Madurai. Madurai is in the south of Tamil Nadu. I hope I got the geography right. So it's north of Madurai. It's a hill. When you go to Parani, you have to climb the steps. Like you climb the steps up till. So there's a story where Narada Maharishi wanted to give a fruit. I think you would have you all heard the story? Where, I think, no. Okay. I think we need to explain the story now. So Narada Maharishi wanted to give a fruit to four capable. Okay, who goes around the earth. That's what it is. So basically, yeah, go on, start. I want a better version. I mean, really trust me on this one. I heard it from my grandmother, so I think you trust me. Thank you. So Narada Swami was given the fruit. It was Malamparam, they say. I don't know what you call it in English. Then we call it mango after that, because mango is everyone's favorite. So he takes it around everywhere. He goes to Brahmaloka, and then he goes to Vaikuntha, and then he comes to Kailasham in the end. So he gives it to Shiva. So Lord Shiva says, what am I going to do with the fruit? So he gives it to his wife. I mean, very strange thing, but he gives it to his wife. So wife says, being a mother, wife wants to give, mother wants to give everything to the children. So she gives it to, she calls the children. So Pillayar and Kartikeya Muruga comes. So they are young children. So she goes to them. Oh, Narada also says, you have to have this fruit. You can't cut it. You can't share it. You have to have it entirely to yourself. So now she is in distress now. She says, I have 2 children. What am I going to do? So she says, who goes around the earth gets to have the fruit. And now Muruga being a very sort of, he's very shrewd, very fast. So, and his Vahanam, as he calls it, is a peacock. And our Vinayaka, you know how he is, a very happy, chubby person. And his Vahanam is a little Mushika. So, and then as soon as he heard this, Muruga set off in his peacock. Now, Ganesha says to his parents, so you're my world, both of you. So if I come around you 3 times, is it valid? And Narada goes, yeah, it is valid. So he goes around 3 times, mom and dad, seeks blessings, and then he is sat outside eating his fruit. And now Muruga comes, finishes everything, goes around the world and comes, and sees brother having a fruit. So that's it. He got super annoyed. Then he goes to his parents and says, I'm very annoyed. So he takes off all his jewels and everything, puts everything down, and then he goes to a hill, and that is Parani. So he goes and sits there. So he doesn't want anything, so no ornaments, no jewels, nothing, goes and sits there. And then later parents they go and bring him back. So she goes and tells like, no, it's not the right thing to do. You have to go back to your parents, and parents go get in. So this is just a little game. You can say it however you want to, but I've been to Pioneer of late, and what I believe is, you see him and then you forget everything. So Swami without the ornaments is more beautiful than him wearing all these ornaments and gold. So without anything, he looks even more beautiful. Muruga means Aragu, Muruga means beautiful. So you feel as if you want to bring him home with you. So what I feel is, you can call Swami any god, whatever you name you give him, but you just have to call him. You call him Muruga, you call him Hari, you call him Rama, you call him Sita, anything. You call the god anything, but please call. You call, he will definitely come. As if he's waiting for you. Our God are our parents. So you in distress, your parents won't like it. So he's literally waiting. All we have to do is just call. So please call. Whatever name it is, just call. Thank you. We will be doing Arati now. Before that, I request Badri to have this one. Badri.
Hare Srinivasa, can you hear me? No. Is it okay? Can you hear me? What an evening. Really divine. I mean, everything came together. Being transported for the last hour or more somewhere else. One thing I'm grateful is we've got a great team here. Very focused, working very hard. Exceptional people supporting that team in the back end. The amount of volunteers. Nothing comes, easy. Everything is effort. And the volunteers have done absolutely fantastic. One thing we pray is, very soon, we have at least a premise, if not bigger than this, something soon. There's only one thing I want to ask of everybody here today. One small action, all that I'm asking is, we need to grow our community. You have friends, you have family, you have a lot of contacts. Do let them know. Saturday was different. It was an experience. We were transported somewhere else. No barrier to language, no barrier to anything. Just let people know. The more numbers we have, the earlier we get to our destination. So please, let's work on increasing our WhatsApp numbers. People who are members, so forward it on. Let's get the numbers to, I don't know, sometime, is it 150 now? Numbers? Yeah. We have around 320, 330. Let's make it 600. We need to. 600. Yeah. So that's all I have to ask for today, because I think if we can get more people together, the momentum will build. As the momentum builds, more of this. So I'll leave you with that. And it was totally divine today. Thank you. Hare Krishna. We will be doing Aarti now. Can I please request to switch off the lights? And after that, once Aarti is finished, I request, if you have come with family, please stand in the queue. You can come and show Aarti to God and take prasad, as well as we have the prasad over there as well, yeah? So once we finish Aarti, please stand in the queue and then you can come and have darshan and show Aarti too. Thank you. Para
ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇವೆಯು Thank you very much. Thank you very much for today's session. I know a lot of people have come, some are local, some might have from far. So please support us. We have every month Sakstra Satsang. I think the next one is mid of March, I think. Second week of March. March 15th. And We have Raghunath, sorry, let me turn my mics on, sorry. It's March 15th in Dorich Hall. It's not in this place. It's in Dorich Hall. The highlight of the event is, apart from doing the satsang, we also have Raghunath Das Maharaj, who is coming all the way from India. And we've invited him to come and perform abhangs and also explain Marathi abhangs and also explain the meaning of the abhangs. So it's going to be a nice short session. So we'll have our Vishnu Sahasranam, and apart from that, we'll also have Raghunath Das Maharaj and his team. It's a musical team actually, so you'll not hear us next time. You'll get some reprieve from always listening to us. So you probably listen to someone else sings better than us, probably. So yeah, so next time, March 15th, Raghunath Das Maharaj and team. So please come over, big numbers. thank you so much. So next event is in Dorich Hall. But after that, I think we have booked this hall for till the end of the year. So we will have every month Sakstra Satsang. So please come and support us. We'll be putting a messages couple of weeks, before the event. So you can spread to your friends. At the end, the whole purpose of doing this is spread the bhakti, to the people, and it's for next generation. Yeah. So we want to do that as a community. So please spread. I mean, we are. There's no restriction, no south, north. At the end of the day, we are all Hindus. That bhakti, we need to spread, and you can, please share it to your near and dear. With good, we grow over a period, 5 years down the line, we have, 300 people, coming for success. It will be wonderful every month, because that's the power. We all, are very busy, over a period, we just run Monday to Friday. We just, once in a month, we think about God. And we come here and at least, as a satsang, as a community together, we can, grow this, over a period of next 5 years. Yeah. So what my request, if you have come with family, please come, stand and do it all together. You come one by one, so we have time. So you can please show arati to God, your prayers, and then collect the prasad. Yeah. Thank you. Hare Srinivasa. Hare Srinivasa. And you're allowed to get home. You're allowed to get home.